Good morning, students. Hope all of you are fine at your home. So stay at your home, be safe and be healthy. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. Yes, dear kids, in the previous video we have to started the 7th class second chapter, whose name is the landforms. And in that video we have to discuss about the two things, exogenic forces and endogenic forces. So today we have to further started next topic. So next topic we have to do as the types of the landform. Types of landforms. So that topic we have to start today. So the work of the exogenic and endogenic forces led to the development of the various landforms. Earth surface के ऊपर various landforms we have to be developed. So this gives the strong base for the classification of the various land. Various land with the height, slope, or these heights on the basis of height and slope. Main types of are the landforms: mountains, second one plateaus, plains, and valleys. So these we have to say that the major landforms: mountains, plateaus, plains, and the valleys. So these are the major landforms. So firstly we have to discuss about the mountains. What we have to discuss? Mountains. What is a mountain? What is a mountain? Mountain are the elevated part of the earth surface. Earth surface का elevated part जो ऊपर की तरफ है. To be considered a mountain, the land must be at least 600 meters high. Sea level से अगर 600 मीटर high है हमारी land, then we have to consider it a mountain or a hill. उसे हम mountain या hill के according consider उसे करेंगे. So mountain region should have steep slope, sharp ridges and peaks. या तो जो slope है वो steep होगी, स्टीप स्लोप होगी, रिजेस होंगे, टॉप शार्प होगी, ठीक है, और पीक्स होंगी, पीक शार्प होगी. एंड एट फर्स्ट साइट द माउंटेन्स लुक सिमिलर बट दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. देखने में हमें ऐसे लगता है कि सभी सेम है, बट दे आर मेकिंग द डिफरेंट वेज. अलग अलग वे से वो सारे के सारे बने हुए हैं. अकॉर्डिंग टू देयर एज दे मे बी कॉल्ड यंग और द ओल्ड. एज के अकॉर्डिंग देखें दे आर द यंग और द ओल्ड. How we have to identify the mountains are the young and the old? हमें किस वे से पता चलेगा कि mountains हमारे young है या old है? If the mountains have sharp peak, जिन mountains की peak sharp होगी, that we have to call the young fold mountains, और उनको हम कहेंगे young mountains. Whose mountain that peak is the round in shape, जिनकी जो peak है वो round shape में होगी, that we have to consider the ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. उन्हें हम कहेंगे ओल्ड माउंटेन्स. यंग माउंटेन्स हैव हाई एंड हाफ शार्प फीचर्स while the old mountains are low and generally have rounded or blunt features. Rounded features होंगी, blunt होंगी. So according to the mode of formation, the mountains can be classified into the three types. First one, fold mountains. Second, block mountains. Formation के according mountains type is the three: fold, block, and third one is the volcanic mountains. Volcanic mountains. So these are the three types of the mountain according to the formation. So firstly we have to discuss about the fold mountains. How the fold mountains are the formed. So these are the most common type of the mountains in the world. World में हमारे जो most mountains हैं that are made up of the fold mountains. Fold mountains की base बने हैं due to the folding of the rock layers. जो rock layers की folding activity है. Previous video we have to discuss about the
इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस में एक्टिविटी थी फोल्डिंग एक्टिविटी। फोल्डिंग एक्टिविटी क्या था? व्हेन द टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंप्रेस्ड ऑन द वन पॉइंट, एट लास्ट that particular point raised upside in the wave form. So that is called the folding activity. So rock layers mostly in the sedimentary type. The process of folding creates the wave-like features. Wave-like features हमारी create होती है in the earth crust which are called folds. और उनको हम क्या कहते हैं? Folds. The upraised, इस वे से जो upraised part है, that we have to consider the anticline, or downfolded rocks terra we have to consider the syncline. What we have to consider? Synclines. So the fold mountains not only occupy the largest area but also have the highest peak. कहते जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं वो सिर्फ लार्ज एरिया ही अपने अंडर नहीं करते, बट और जो उनकी पीक्स हैं डेट वुड आल्सो बी द शार्प पीक्स होती हैं इनकी। सो सम एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन: हिमालयस इन इंडिया, एशिया, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एल्प्स इन यूरोप, एंडीज इन द साउथ अमेरिका. So these are the few fold mountain examples. So next, on the basis of their age, time of origin, fold mountains can be young or the old. कहते टाइम एज के अकॉर्डिंग टू उनकी हाइट हम कहते हैं टू टाइप्स के, यंग और ओल्ड. अब यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? हुज पीक वुड बी द शार्प, जिनकी जो पीक है वो शार्प होगी, डेट वी हैव टू कंसिडर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. एंड हुज पीक इज द राउंड शेप और ब्लंट, डेट माउंटेन्स वी हैव टू कंसिडर द व्हाट वी हैव टू कंसिडर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. Old fold mountains. So young fold mountains have, we can say that the recently formed millions of years ago, just like Himalayas, Rockies, Andes, Atlas and the Alps. So these are, we have to consider the young fold mountains. The mountains which were formed several hundred million years ago, जिनको बने हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया. So that mountains we have to consider the ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जैसे उराल्स, यूरोप, अरावलीज, एल्पचीन्स. सो दीज माउंटेन्स वी हैव टू कंसीडर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. मतलब जो इनकी हाइट है डेट वुड बी द डिक्रीज, हाइट भी डिक्रीज हो गई है, और जो इनकी टॉप है, पीक है, डेट आल्सो बी नाउ इन द राउंडेड फॉर्म, और वो भी राउंड शेप में चेंज हो गई है. सो नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? The length is more than the width. Length ज़्यादा है, width कम है. Most of them have the parallel ranges. Parallel ranges में they have to be divided. Young fold mountains are high with the conical peaks and steep slopes. Young fold mountains है वो high होती हैं, peak उनकी conical होती है, और जो slopes है that would be the steep, बिल्कुल सीधी steep जैसी slopes होती हैं. And old fold mountains are low with rounded peaks and comparatively gentle slope. जैसी जैसी पीक अपर साइड से राउंड होती जाएगी, सेम वे जो स्लोप है वो भी जेंटल में चेंज होती जाएगी. सो मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स आर अलोंग विद द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ ही वो होते हैं. सो नेक्स्ट वन इज द ब्लॉक माउंटेन्स. नेक्स्ट माउंटेन वी हैव टू डिस्कस द ब्लॉक माउंटेन. A block mountains we have to make with the activity of the faulting. That faulting activity also we have to create by the endogenic forces के according ही ये बनती है. Block mountains have been formed due to the horizontal tectonic forces के कारण ही these forces can develop cracks in the earth crust. अर्थ क्रस्ट के बीच में क्रैक्स क्रिएट करते हैं और अर्थ क्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं ब्लॉक्स में. जब वन ब्लॉक सिंक डाउन साइड एंड सेकंड जो साइड्स वाले ब्लॉक्स हैं दैट आर द रेज्ड अप साइड, सो दैट वी हैव टू कंसीडर द ब्लॉक माउंटेन्स.
Tectonic forces can cause the movement of the crustal blocks along the cracks or faults. Cracks बनाते हैं, faults बना देती हैं. So this movement can be upward or downward. एक upward हो जाती है, एक downward हो जाती है. और जो upward part है between the two faults when the middle block is raised, जो middle वाला block है raised या side वाला नीचे चला गया. So जो raised part है that we have to consider the block mountain. What we have to consider? Block mountain. And between the two faults when the middle one block slip downside, जब middle वाला block है वो slip हो जाता है, so raised वाला part ऊपर आएगा, that we have to consider the block mountains. Outer blocks are slip downside, outer blocks भी नीचे चले जाते हैं, so that is also the जो center वाला रह गया that is the block mountains. What are the characteristics of the block mountains? Block mountains की क्या characteristics है? They are normally flat top, जो top है उनकी flat होगी, peak जो sharp नहीं होगी, and steep slopes होंगी. Block mountains are massive in size and have smooth formation. Size भी normal होगा और जो formation है वो easy way से उनकी बन सकती है. So main example Vindhyas mountain in the India and Vosges in the France, Europe में, and Black Forest in the Germany and Salt Lake in the Pakistan. So these are the examples of the block mountains. Flat should be the top and they are becoming with the activity of the faulting. ये हमें कौन सी activity से बनते हैं? Faulting activity से. So in today's video we have what we have to discuss? Types of the landforms. Different types of landforms. Which one is the mountains, plains, plateaus and the valleys. Firstly we have to discuss about the mountains. According to the formation there are the three types of the mountain: fold mountains, block mountains and volcanic mountain. Further what we have to discuss? Fold mountains and the block mountains. So hope all the students have watched the video carefully. So take care. Bye bye.